you start your journey from Paris Gare du Nord station, since it's a huge place, it is advisable to reach the station at least an hour before and check for your platform number. Coach numbers and everything on the station is mentioned in English as well, so you won't have any language issue here. Thalys are the high-speed trains in Europe and it takes around 1.5 hours to reach Brussels from Paris. Once you get down at Brussels Midi station, check for the platform number on the screen for your next train to Bruges. From here you will board a local RER train, ticket of which will be included in your e-rail pass, so whichever train is next available at earliest, you can board it. This is how the Brussels Midi station looks like. It is very easy to reach your next platform. Just follow the signs and keep an eye on the screens displaying the platform number for your train. So we are catching our next train to Brugge from platform number 11. तो आज हमने मॉर्निंग पेरिस नॉर्ड से थैलिस ट्रेन ली है, विच इज़ दी हाई स्पीड ट्रेन इन यूरोप, और वहाँ से हम ब्रुसेल्स आए। ब्रुसेल्स तक की जर्नी 1.5 आवर्स की है, और वहाँ से जो उनकी लोकल इंटरसिटी ट्रेन चलती हैं वो हमने ली है फिर ब्रुगे। ब्रुसेल्स से ब्रुगे 1 घंटे का रास्ता है, डायरेक्ट ट्रेन जाती है। तो अभी हमें सीट मिली है। नीचे इनका सेकंड क्लास रहता है, ऊपर पूरा फर्स्ट क्लास रहता है। तो लेट्स सी ऑल्दो आपने पास में अपने सारे जर्नी ऐड कर रखी है, बट जिस टाइम पे चेकिंग हो रही है, अगर उस टाइम पे आपकी वो पर्टिकुलर जर्नी एक्टिवेटेड नहीं है, यू मे बी फाइन। सो मेक श्योर कि बोर्ड करते ही सबसे पहले अपना जाकर टिकट को एक्टिवेट कर लीजिए। की बुकिंग के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप क्लूब से ई-रेल का पास ले सकते हैं, और फिर ई-रेल की ऐप पे जाकर जो ट्रेन्स आपको अपनी पूरी जर्नी में लेनी है उसको आप ऐड करते रहेंगे। ऐड जर्नी वहाँ पे ऑप्शन आता है, और जब भी आप कोई ट्रेन बोर्ड करते हैं तो उसमें आप यू विल गो टू माई पास, और वहाँ पे वो आपकी ट्रेन शो कर रहा होगा, वहाँ से आप उसे एक्टिवेट कर देंगे। जनरेट अ QR कोड, तो यहाँ पे जब चेकिंग होगी दे विल चेक दैट एक्टिवेटेड ticket in your phone. Once we reached the Brugge station, since we are on a day trip, we looked for the lockers to keep our luggage. लॉकर्स में सामान रखने के लिए यहाँ पे एक मशीन लगी है जिसमें कि आप कार्ड से पेमेंट कर सकते हो। आपको एक पिन कोड वहाँ पे सेट करना होता है और इसके चार्जेस 10 यूरो है। यहाँ पे अलग अलग साइज़ के लॉकर है, एक्सेल है, एम है। जैसे हमारे 2 बैग थे तो हमने एक्सेल लॉकर लिया था। दिस इज़ अ ग्रेट फैसिलिटी। अगर आप वाया ब्रूग्स जाना चाह रहे हो एम्स्टर्डम, कीप योर लगेज हियर इन दिस लॉकर रूम। इट इज़ टोटली सेफ। पे 10 यूरो, यू आर फ्री टू एक्सप्लोर द सिटी। So when we got to the locker room, there was a representative who was helping us to understand how to book the locker. So we actually checked the size of the XL locker based on our size of our suitcase, and he guided us how we can pay and book the locker. Once you are collecting your locker, you need to enter your PIN code that you must have set while booking the locker. After that, the symbol that you might have set, in our case it was flights. After that, you will select the option of end rental and it will show you your locker number, and there your locker will be unlocked.